Okay, so we'll start with next question. A proton is accelerating on a cyclotron having oscillating frequency of 11 megahertz in external magnetic field of 1 Tesla. If the radius of its breeze is 55, then its kinetic energy is. तो हमारे पास frequency दिया हुआ है, that is 11 megahertz, mega is 10 power 6, and external magnetic field दिया हुआ है, that is 1 Tesla, and radius of D 55 सेंटीमीटर, मतलब 55 into 10 power minus 2 मीटर. आपको काइनेटिक एनर्जी पूछा है, so E is equal to, you know what is kinetic energy? Q square B square R square by 2m. तो चार्ज एंड प्रोटॉन वी ऑलरेडी नो, और वैसे भी ये जूल में आता है, तो इसको ईवी में कन्वर्ट करना है. डिड वी सॉल्व दिस यस्टरडे? तो हो गया था ये क्वेश्चन, तो इट्स ओके. वी हैव डन दिस क्वेश्चन यस्टरडे in the last session and it turned out to be 14 point something. All right, so this was done. Next question. A long straight wire in the horizontal plane carries a current of 75 ampere in north to south direction. Magnitude and direction of field at a point 3 centimeter east. So you know, let's say this is north south direction and this will be east west. then अगर ऐसा कंफ्यूजन होता है तो you can simply rotate this something like this. Okay, so it's like this. Here north, here south, this is east, this is west. So a long straight wire in the horizontal plane carries a current north to south. So the current of 75 ampere is going north to south like this. Magnitude and direction of field at a point 3 meter east, मतलब आपको यहाँ पे this distance is given to you, यहाँ पे आपको find करना है P point पे what is magnitude and direction. Easy है, because you already know formula for magnetic field at a distance A. It was mu 0 I upon 2 pi A. So 4 pi into 10 power minus 7 into 75 ampere, 2 pi into 55, 9. What is this distance? 3. तो 3 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको ये, तो 1 जा एंड 2 जा, 1 जा एंड 25 जा. ओके, तो 50 into 10 power minus 7, मतलब 5 into 10 power minus 6 टेस्ला. डायरेक्शन, you know right hand thumb rule, अगर करंट अपवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इज along the curved fingers, or if I do like this, okay, right? तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये डाउन अप क्यों दिया है, बिकॉज नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, ये जो हम डायरेक्शंस लेते हैं ये अर्थ के सरफेस पे होता है. आप इसको देख रहे हो गलत तरीके से, तो दैट्स व्हाई आई वाज ड्राइंग समथिंग लाइक दिस. So what I'll do is I'll just redraw this diagram so that you understand directions. So if I take on the plane, तो पहले मैं plane draw कर लेता हूँ. मान लो ये अर्थ का सरफेस है, just assume. इस पे this is north south, this is east and west. तो north साउथ ईस्ट, और ये अप या डाउन समझेगा हमको. अब तो द करंट इज नॉर्थ टू साउथ, तो करंट इज नॉर्थ टू साउथ, इसका मतलब जब ईस्ट पॉइंट पे बात करोगे, हाउ विल मैग्नेटिक फील्ड गो? मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, ऐसा जाएगा ना. तो यहाँ पे ये आएगा अप, अप आएगा. इट्स नॉट डाउन, इट शुड बी अप. नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ है, लुक, नॉर्थ टू साउथ है, तो कर्ल्ड फिंगर्स, फिंगर्स के हिसाब से इट विल गो अप, राइट? जस्ट अ मिनट.
So according to right hand thumb rule, if the current is along the thumb, curled finger give direction magnetic field. So the magnetic field at this point is going up. It is not going down. So 5 into 10 power minus 6 Tesla up. Okay, so क्वेश्चन बहुत सिंपल था, एक्सट्रीमली सिंपल था. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ अ टोरॉइड कोर are 28 and 29 centimeter respectively, and around the core 3700 turns of wire are wounded. If the current in the wire is 10 ampere, then the magnetic field inside the core of toroid is. So if you remember, ये था आपके पास toroid. Toroid पे there are turns, something like this. So you have number of turns on this toroid like this. Okay, how much current is there? 10 ampere current is there. आपको inner radius और outer radius दिया है, so you have been given this value which is 28 and the outer radius which is 29 centimeter. Okay, then there are total 3700 turns. So इसको सॉल्व कैसे करेंगे? और आपको मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर, डू यू रिमेंबर फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ टोरॉइड? mu 0 n I, where small n is number of turns per unit length. आपको याद है क्या कि यहाँ पे एक्सिस ऑफ टोरॉइड पे द फॉर्मूला वाज mu 0 n I, मतलब mu 0 कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन 2 pi r into I. अब प्रॉब्लम है r का, तो r यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था ये एवरेज रेडियस लिया जाता है. So you will be taking this r as r average will be inner radius plus outer radius by 2. 28 plus 29, 57 by 2, which is 28.5 by, which is 28.5 centimeter by the way, centimeter में है. Good. तो mu 0 is 4 pi into 10 power minus 7. Total number of turns are 3700 into 10 power minus plus 2. 3700 है तो 3700 into 10 power plus 2. करंट कितना बोला है? 10 एम्प का बोला है करंट, अपॉन 2 पाई into एवरेज रेडियस इज 28.5, 1 जा एंड 2 जा, तो ये सॉल्व करेंगे. 37 to 2 is 74 upon 28.5, 10 power minus 4 टेस्ला. What is 74 upon 28.5? इजी है. 2 से ऊपर 3 से कम मतलब 1 and 2.6, तो आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पे 2.6 into 10 power minus 4, which is not correct. Why not correct? मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कहाँ कन्वर्ट किया? हाँ, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 power minus 2 होगा. So this will be minus 2 minus 2. So you will have one of these options needs to be corrected. So you will have 2.6 into 10 power minus 4. तो ऑप्शन ए या बी में 10 पावर माइनस 4 करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? टोरॉइड में क्या करते हैं हम लोग? एवरेज रेडियस लेते हैं. ऑलराइट, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क experienced by a square coil of side 12 centimeter which consists of 25 turns carries a current of 10 ampere suspended vertically, and the normal to the plane of coil makes an angle 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field, okay, of magnitude 0.9 टेस्ला. तो आपको टॉर्क फाइंड करने के लिए बोला है. तो हाउ डू यू फाइंड आउट टॉर्क? इज सिंपल. इफ यू रिमेंबर, इट इज रिलेटेड टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. सो इफ यू हैव अ कॉइल, आपको याद होगा कि इफ यू हैव अ कॉइल, लेट मी शो
डायग्रामेटिकली। मान लो ये कॉइल है यहाँ पे, and normal to the surface is this, and magnetic field is horizontal, so this angle here is 30 degree according to the question। और आपको टॉर्क पूछा है, यहाँ पे एक फोर्स होगा, अंदर की तरफ एक फोर्स होगा। टॉर्क का इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, टॉर्क turned out to be n b I a sin थीटा। हम जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देख रहे थे उस केस में थीटा वॉज 90 डिग्री, इसलिए साइन 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली परपेंडिकुलर था। करंट, फिर यहाँ पे तो फोर्स नहीं था, फिर यहाँ पे 270 डिग्री। तो इन दिस केस there is some angle between area vector and magnetic field. So total number of turns, do we have any information about it? 25। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.9 टेस्ला। करंट कितना है? 10 एम्पियर। एरिया स्क्वायर कॉइल है 12 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 144 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, साइन ऑफ 30। तो ये 25 इंटू 0.9 को मैं 9 लिखता हूँ, 10 पावर माइनस 1 और ये 10 पावर प्लस 1 गया, ओके, इंटू 144 10 पावर माइनस 4 और साइन 30 इज हाफ, तो 1 जा एंड 70 2 जा 72 इंटू 25, 720 प्लस 720 प्लस 360, 720 प्लस 720 इज 1440 प्लस 360, 1500 में 300 1800 आता है वो। 1800 इंटू 9 इंटू 10 पावर माइनस 4, मतलब 18 इंटू 9, 18 इंटू 9 इज 180 में से 18 माइनस करो 162, तो 162 इंटू 10 पावर माइनस 4, मतलब 1.10 पावर ये 2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने वो कैंसिल आउट कर दिया। तो यह आएगा आपका 1.62 न्यूटन मीटर। 1.62 न्यूटन मीटर है क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। So all you need is to do calculations quickly. Next question, it's a good question again. An element of 0.05 I cap meter, मतलब length of element dl दिया है आपको, is placed at the origin as shown in figure, which carries a current of 10 ampere. So this element has a current of 10 ampere. The magnetic field at a distance of 1 meter in perpendicular direction is. So how to solve this question? So if you don't remember, Biot-Savart law easy था. If I want to find out what is magnetic field due to this wire, first of all I will take a small element of wire. तो ये है dl का डायरेक्शन, यहाँ पे लिया था हमने एक पॉइंट P, सीधा सीधा एलिमेंट के सेंटर से उस पॉइंट P तक जो लाइन ड्रॉ करोगे वो जो भी एंगल बनाएगा, इन दिस केस इज 90। तो in our example it is also 90 because length element is this, point is here, so angle is 90. So according to Biot-Savart law, magnetic field due to this small length element is mu 0 by 4 pi I dl sin theta by r square. Mu 0 by 4 pi is 10 power minus 7, current is 10 ampere, dl is 0.05 meter, मतलब 510 power minus 2 लिखता हूँ डायरेक्टली मैं, 5 into 10 power minus 2 है ये, एंड इंटू साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ 90 अपॉन आर, तो 1 ही बोला है, 1 मीटर तो 1 स्क्वायर हो गया। 5 10 पावर माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8, साइन 90 इज 1, तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 8 टेस्ला। तो आपको जस्ट बायोट-सावर्ट लॉ यूज करना था यहाँ पे, दैट्स इट।
Okay, so next question. Okay, so here we have next question. A uniform conducting wire of length 18A, 18A, okay, resistance R is wound up as a current carrying coil in the shape of a regular hexagon of size A. If the coil is connected to a voltage source V0, then the magnetic moment of the coil is, देखो first of all वायर का लेंथ कितना है 18A, उसको हेक्सागन बनाया ऑफ साइड लेंथ A, तो 3 टाइम्स मतलब 3 टर्न आने वाले हैं वहां पे, because total length is 18A of wire. Okay, and you have perimeter. What is perimeter? Perimeter कितना 6A, right? So number of turns is total length upon perimeter. क्योंकि बिकॉज इट इज वेरी सिंपल थिंग, मेरे पास अगर 18 सेंटीमीटर का वायर है और मैंने अगर 6 मतलब हेक्सागन बना दिया विथ साइड 1 मीटर ईच, तो 3 बार बनेगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स विल बी 3. तो 18A by 6A, this is 3. You have number of turns as 3. First thing. Then it is connected to some voltage source V0. That is okay. Resistance R, that is again okay. We are supposed to find out magnetic moment of the coil. So magnetic moment is given by what? It is given by I into A, right? I is V0 by R into A. तो सिर्फ अब ऐसा है कि हाउ डू यू फाइंड आउट एरिया. एरिया कैसे फाइंड करोगे, डायग्राम में भी दिया हुआ है. दिस इज 60 डिग्री, ओके, और हेक्सागन है तो यू शुड नो हेक्सागन वो 60 है, तो फिर ये भी 60 और ये भी 60 है. मतलब normally what happens is if I join this, you have 6 equilateral triangles. What will be area of each triangle? How do you find out? If this is A, बेस ए है, हाइट कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम के लिए फिर ये पता होना चाहिए. हाँ, तो दैट इज एंगल पता है, सो व्हाट विल बी दिस. हाँ, तो व्हाट व्हाट इज एरिया? या तो आपको डायरेक्टली एरिया, सी लिसन टू मी, फर्स्ट थिंग इज देयर आर मोर देन वन वेज ऑफ फाइंडिंग आउट एरिया. एक, आपको डायरेक्टली एरिया ऑफ हेक्सागन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट? अगर वो नहीं पता तो 2, as you are saying, by using that angle. 3, by applying Pythagoras theorem, right? So in any case you can solve this. So area of each of this equilateral triangle is going to be 3 root 3 by 2a square. कैसे आया? तो वो ही तो मैं बोल रहा हूँ कि दैट यू आर सपोज्ड टू वर्क आउट हाफ बेस इनटू हाइट. हाउ डू यू फाइंड? एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री. व्हाट इज दिस साइड? यू शुड नो. ए आएगा. हाँ, तो अगर ये ए आएगा तो फिर फाइंड करो, कैसे करोगे? हाउ डू यू फाइंड आउट? पाइथागोरस करो, आपको और एक तरीका है वो करो, इट्स अप टू यू. यू फाइंड आउट दिस एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल, ऑलराइट, ओके. ईच करो या तो पूरे के पूरे का निकालो. दिस इज वोल कंप्लीट, दिस एरिया इज कंप्लीट हेक्सागन का, राइट? तो इफ यू वांट यू कैन फाइंड आउट ईच ट्राइंगल देन मल्टीप्लाई बाय 6. ओके, सो हेक्सागन का एरिया टर्न्स आउट टू बी 3 रूट 3 बाई 2a स्क्वायर. ये फॉर्मूला है ये. दिस इज फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ हेक्सागन, ओके. और मैग्नेटिक
मोमेंट में हमने ये एक टर्न के लिए लिया, बट देर आर 3 टर्न्स, तो n से मल्टीप्लाई होगा, राइट? तो मैग्नेटिक मोमेंट is n, which is 3, v0 by r, and area is 3√3 by 2a square. मतलब ये आएगा 9√3 by 2 v0 by r a square. मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए, हमारे पास एक वायर थी जिसको बाउंड करके हमने हेक्सागोनल कॉइल बनाई है। टोटल लेंथ ऑफ वायर था 18a, पैरामीटर है 6, पेरीमीटर है 6a, तो टोटल लेंथ अपॉन पेरीमीटर गिव्स यू नंबर ऑफ टर्न्स, 3 टर्न मिल गया। मैग्नेटिक मोमेंट इज m, which is equal to nia. n is number of turns, I is current, which is v0 by r, a is area of hexagon. अगर आपको हेक्सागन का एरिया का फॉर्मूला पता है तो वेल एंड गुड, 3√3 बाई 2 इंटू साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अगर नहीं पता है तो हेक्सागन हैज 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल, हर एक का निकालो, मल्टीप्लाई बाय 6 करो, आंसर मिलना चाहिए। एंड यू सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू इन the formula for m and you get 9√3 by 2 v0 by r a square. Next question. Due to small magnet intensity at a distance x in the end on position is 6 Gauss, what will be the intensity in Gauss at distance x by 2 on broad side? All right, so the thing is, this question is related to bar magnets, magnetism, जो हमारा नहीं हुआ है, तो it will go in the next chapter. A solenoid of cross-sectional area 2 into 10 power minus 4 meter square and 900 turns has 0.6 ampere meter square magnetic moment, then the current flowing through it is, अभी अभी देखा हमने, solenoid है, right? So you have been given a solenoid and you have been given few parameters like area, number of turns and m. So what was the formula for m? N into I into a. So using this equation, solve करो. You need not to get confused between small n and capital N. So it's just total number of turns here. You're supposed to find out current. So current is m upon na. M is given to you 0.6, मतलब 6 into 10 power minus 1. N is 900, 9 to 10 power 2. And A is 2 into 10 power minus 4. तो ये easy है because this is 2 by 3. This cancels out. तो ये 1 by 3, 1 by 3. नीचे 10 पावर माइनस 2 है, ऊपर जाके प्लस 2 होगा, और ऊपर 10 पावर माइनस और एक है, तो दिस इज जस्ट 1 by 3 into 10, मतलब 3.33 एम्पियर, क्योंकि 1 by 3 is 0.33 into 10 is 3.33. मैं वापस बता रहा हूँ, m था 0.6, 6 into 10 power minus 1. n number of turns are 900 into 2 into 10 power minus 4. 2s are 3s are cancel 1 by 3 is 0.33. 10 पावर माइनस 1 है ऊपर और नीचे 10 पावर माइनस 2 है, तो ऊपर आके 10 पावर माइनस 1 इंटू 10 पावर प्लस 2, मतलब 10 बचेगा, 0.33 into 10 is 3.33 ampere. Okay, so this is how you can solve this particular question. Next question. The work done in moving a dipole from its most stable to most unstable position in a 0.09 Tesla uniform magnetic field is. We have done the same question for electric dipole. Formula is same. सिर्फ अगर आपको नहीं याद होगा तो doesn't matter. मैं रिपीट कर देता हूँ. So we have a situation here. मान लो we have magnetic field here. तो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है
हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल रखा था। इलेक्ट्रिक डायपोल पे फोर्स एक्ट होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम प्लस टू माइनस, राइट। तो ये प्लस चार्ज था तो इट वाज मूविंग टुवर्ड्स द फील्ड, फिर रोटेट होगा एंड इट वाज रोटेटिंग। फिर हमने बोला कि इसको अगर न्यूट्रलाइज करना है, बैलेंस करना है, तो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। उस टॉर्क का काम क्या है, सम इनिशियल एंगल थीटा जीरो से फाइनल एंगल थीटा तक रोटेट करना। मतलब जो वर्क डन था वो वर्क डन कहाँ जाएगा, इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ potential energy and that is from some initial angle theta 0 to final angle theta. External torque, it is a function of theta d theta. okay, तो वर्क डन W, अब हमारे पास सिर्फ डिफरेंट क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो प्लस माइनस लिखा है मैं यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल है तो आई कैन ड्रॉ अ मैग्नेट डायरेक्टली, आई कैन से आई हैव अ बार मैग्नेट। इवन तो ये हमारा थियरी में नहीं हुआ है, बट आई एम स्टिल टेकिंग दिस बिकॉज it's okay, we already know what is electric dipole, so it should not be an issue for you to solve this kind of question, right? So मान लो ये मैग्नेटिक डायपोल है एंड दिस इज नॉर्थ पोल ओवर हियर, जिसका स्ट्रेंथ हम लोग लेते हैं प्लस क्यू एम, पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, एम्पियर मीटर में मेजर होता है ये। देन हमारे पास ये है साउथ पोल जिसको हम माइनस क्यू एम बोलते हैं, इट इज अगेन मेजर्ड इन एम्पियर मीटर। Now there will be a force acting which will be here, and on the south pole it will be in the opposite direction because you know north attracts south and south attracts north, so it will rotate। तो इस टॉर्क को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें अपोजिट एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा जो सेम जॉब करेगा। देन इफ यू रिमेंबर, एक्सटर्नल टॉर्क इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में होता है क्यू ई साइन थीटा, right? Wrong. PE sin theta, where P was electric dipole moment, which was 2L into Q. PE sin theta यहाँ पे होता है M, where M is magnetic dipole moment। वहां पे था PE sin theta electric dipole moment, यहाँ पे M magnetic dipole moment, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, sin theta d theta। इस पे आप करोगे इंटीग्रेट। okay, so let me make some space because we will need some space over here। all right, so ऐसा है कि अब m constant, b constant, constant outside, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, क्योंकि कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है। डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स आर अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट ऑपरेशंस हैं बेसिकली। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन? हम लोग एक कंटिन्यूअस फंक्शन के छोटे छोटे पार्ट्स कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन? हम छोटे छोटे पार्ट्स को साथ में ला रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेशन। तो अगर डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, तो माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा जीरो टू थीटा। आई डोंट लाइक दिस नेगेटिव साइन, आई एम एलर्जिक टू नेगेटिव साइन, तो मैं कॉस थीटा यहाँ पे मैं लिमिट्स को उल्टा कर लेता हूँ एंड आई एब्सॉर्ब दिस साइन। तो ये आपको मिलेगा एम बी कॉस थीटा जीरो माइनस कॉस थीटा, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। अब आपको क्या बोला है, द वर्क डन इन मूविंग अ डाइपोल फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल कब होगा, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब ये मैग्नेटिक डाइपोल, आई डोंट नो इफ आई कैन जस्ट सिलेक्ट दिस, इफ इट इज लाइक दिस। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे आने के बाद कोई फोर्स एक्ट ही नहीं होगा, तो इट विल बी मोस्ट स्टेबल व्हेन इट इज magnetic dipole moment is in the direction of magnetic field, that is most stable, right? And most unstable 180 degree, exactly ulta, that is most unstable position. इसका मतलब MB most stable is cos of 0 and final is most unstable, that is 180. तो MB cos 0 1 minus cos 80 is -1, तो 1 minus of minus is 2, तो ये आएगा 2 2 इंटू एम की वैल्यू पता है कि हमको 0.5 इंटू 0.09, तो ये तो 1 ही हो गया, मतलब आंसर इज 0.09 जूल। है क्या ऐसा? ऑप्शन नंबर सी में है। Why it is most unstable, you need to understand. क्यों मोस्ट अनस्टेबल होगा? हाँ, अपोजिट को, यस, लाइक पोल्स, क्योंकि नॉर्थ विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो दैट इज मोस्ट अनस्टेबल सिचुएशन। ओके, magnetic susceptibility, this question is from magnetism, so we will cover this in magnetism. Magnetic susceptibility, again magnetic needle, again this will go in magnetism chapter. What is the magnitude of axial field due to a bar magnet? It will again go in magnetism. Short bar magnet, magnetism. Pole strength, magnetism. Solenoid has a core of substance, ये भी magnetism. This all is in magnetism. So we'll start with next set, because magnetism I have to tell you a little bit of theory. So we are currently studying magnetic effect of electric current. I will be taking 15 to 20 questions only on galvanometer, some higher level questions soon. So let's start with next set. A charged particle is moving on circular path with velocity v in a uniform magnetic field B. If the velocity of the charged particle is doubled and strength of magnetic field is halved, then radius becomes. According to the question, you have a charged particle which is moving in circular path with velocity v in a uniform magnetic field B, and you know a charged particle can perform circular motion only if magnetic field is perpendicular to this. That is the condition, that is what you should know. तो ये magnetic field है B और velocity का direction जो है वो tangential होगा at every point. इसका मतलब velocity and magnetic field they are perpendicular. We know we require centripetal force. So first of all, force due to magnetic field is Q V bar cross B bar. मतलब this is equal to Q V B sine theta, where theta is angle between velocity and magnetic field, which is 90. How come it is 90? Because if I move this vector, keep it here, it makes 90-degree angle. So it is 90 degree. So you have force due to magnetic field as QVB. Now, necessary centripetal force for circular motion is provided by force due to magnetic field. Okay, centripetal force is mv square by r, and this is qvb. V cancel, तो r is equal to mv by qb. मास तो कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू v by b. So R2 by R1, this is R2 by R1 equal to V2 by V1 and B1 by B2. Okay, so we have, according to the question में क्या बोला है हमको बोला है if the velocity is doubled, मतलब V2 is 2 times of V1, मतलब V2 by V1 is 2, this is 2, and magnetic field is halved.
मतलब B2 is B1 by 2, मतलब B1 by B2 is 2, है ना? According to the question, V2 is 2V1 and B2 is B1 by 2. तो B1 by B2 is 2, V2 by V1 is 2, तो ये 2 into 2 मतलब 4 times हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. A straight wire having mass of 1.2 kilograms and length of 1 meter carries a current of 5 ampere. If the wire is suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field, then the magnetic field is. तो पहले मैं सिचुएशन समझा देता हूँ. You have, let's say, this is the magnetic field. You have horizontal magnetic field. ये है आपका horizontal magnetic field यहाँ पे. Something like this. Uniform magnetic field है. Then this is B. अब एक वायर है. वायर में करंट होगा तो ही फोर्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा. Which is like this, right? या फिर I mean depends on orientation, but it is suspended. Suspended मतलब वो अभी एयर में फ्लोट हो रहा है. Suspended in mid air by uniform horizontal magnetic field, and it can happen only if this wire has current. और करंट बोला है 5 एम्पियर का करंट है. लेंथ इसका 1 मीटर है. Wire का length is 1 meter, so I should be actually showing wire smaller so that it is completely inside like this. तो ऐसा अपने आप कुछ भी फ्लोट नहीं होता. Forces need to be balanced. हमको पता है any current carrying conductor experiences force due to magnetic field. अगर हमारे पास सिंगल चार्ज पार्टिकल हो तो it experiences force which is QVB sin theta. If you have a current carrying wire, it experiences force which is Bill sin theta. मैंने इसलिए आपको बताया था Bill याद रखना, right? What is angle between current and magnetic field? 90 degrees. What is sin 90? 1. So since this angle theta happens to be 90 degree, the force is BIL. Now, as I told you, nothing can float in air on its own, which means magnetic force is balancing weight. It is balancing weight. So this BIL is equal to mg. हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड. तो B is equal to mg by IL. M is 1.2, G is 9.8, but I'll take roughly 10 because ऑप्शन में एक भी आंसर नियर बाय नहीं है. मतलब दो ऑप्शन नियर बाय होते तो फिर मुझे 9.8 यूज करना पड़ता है. अपॉन I into L. What is I? 5. What is L? 1. 1 za, 2 za. In fact, you get exact answer 2.4 Tesla. Next question. A 2.5 meter long straight wire having a mass of 500 grams is suspended in mid-air by uniform horizontal magnetic field. If current of 4 ampere is passing through it, find the magnitude of magnetic field. Again, the same formula, same concept, same. So I'll skip it. वैसे orally कर सकते हो आप. You should be telling me orally क्योंकि आपको पता है mg by IL. M mass is half a kilogram. G is 10, मतलब half into 10 is 5. ऊपर 5 आएगा. I into L 4 into 2.5. 4 into 2.5 is 10. हाँ 4 into 2.5 10 है ना. 10 ऊपर क्या आया था 5, नीचे क्या आया 10. हाफ 0.5 टेस्ला. खत्म. A current of 10 ampere
is flowing in a wire of length 1.5 meter. A force of 15 Newton acts on it when it is placed in uniform magnetic field of 2 Tesla. The angle between मतलब angle between magnetic field and direction of current मतलब FB equal to Bill sin theta. So sin theta is FB upon BIL. FB is 15 Newton, 2 Tesla, current is 10 amp and length is 1.5. ये तो इजी है, नीचे ये 15 है और ये ऊपर 15 है, साइन थीटा की वैल्यू हाफ है तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, an 8 centimeter long wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. If the magnetic field inside solenoid is 0.3 Tesla, the force on the wire is। वैसे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ओरली हो सकता है, बट आई वुड वांट टू शो यू डायग्रामेटिकली कि हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये एक सोलेनॉइड है एंड इन दिस solenoid, pardon me for my drawing, anyways this is axis और हमारे पास जो वायर है 8 सेंटीमीटर वायर, it is placed perpendicular, so you have a wire which is kept like this, right? तो हमको ऑलरेडी पता है, क्या पता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड इज अलोंग द एक्सिस, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और इसमें जो करंट है दिस इज गोइंग लाइक दिस, मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन थीटा इज 90। ये समझना जरूरी था। इसी को मैं अगर पैरेलल कर देता हूं तो थीटा बिकम्स 0, नो फोर्स एक्ट्स, उस केस में आंसर डायरेक्टली 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है एफ बी इज बी, ये बी फील्ड कहां से आया वी डोंट केयर, सोलेनॉइड से आया, एक्सटर्नल फील्ड है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया है, वी डोंट केयर, देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड। आई करंट, एल लेंथ ऑफ द वायर विच इज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ओके यहाँ तो पूरा ही इनसाइड है, ओके, साइन थीटा साइन 90, बी की वैल्यू 0.3, करंट की वैल्यू 10 और लेंथ इज 10 से 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 3 इंटू 0.3 इंटू 10 इज 3, 3 इंटू 8 इज 24, तो 24 इंटू माइनस 10 पर माइनस 2 इज 0.24 न्यूटन, 0.3 इंटू 10 3, 3 इंटू 8 24, 24 इंटू 10 पर माइनस 2 इज 0.24 न्यूटन। The magnetic force per unit length of on a wire carrying a current of 10 ampere making an angle of 45 with the direction of uniform magnetic field of 0.20 Tesla, magnetic force per unit length मतलब F by L find करना है on a wire carrying a current 10 amp making an angle 45 with direction of uniform magnetic field. Do we know F is equal to BIL sin theta? खत्म। F by L is BI sin theta। B की वैल्यू आपको 0.20 दी है, मैं तो इसको 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 लिखने वाला हूँ। करंट की वैल्यू 10 दी है और साइन 45 है, तो ये 10 पावर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 2 साइन 45 इज 1 बाई रूट 2, 2 अपॉन दिस इज रूट 2, रूट 2 2 बाई रूट 2 दिया ही है, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a circular coil of 20 turns and 10 centimeter radius is placed in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla normal to the plane of the coil, okay, so magnetic field is perpendicular to the coil. If the current in the coil is 5 ampere, cross sectional area is 10 power minus 5 meter square and coil is made up of copper wire
having free electron density about 10 power 29 meter per meter cube, then the average force on each electron in the coil due to magnetic field is very good. To solve this question, you need to know equation of current in terms of drift velocity, in terms of number density, in terms of area of cross section. तो ये है n e v d into a. ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिराइव किया था इक्वेशन. सो मुझे कम से कम यहाँ से e v मिल गया. why e v समझेगा. तो I have I by n a, because when I want to find out what is total force, या फिर force on each electron, I know that is QVB, but Q is E, V is VD into B, or EVD is I upon NA from equation number 1 into B from equation 1. ओके. करंट हमको दिया हुआ है, कितना करंट है? 5 एम्पियर. मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.1, मतलब 10 पावर माइनस 1. नंबर डेंसिटी कितना है? 10 पावर 29. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 10 पावर माइनस 5. 10 पावर 29 माइनस 5 इज 10 पावर 24. ऊपर जाके माइनस 24, मतलब 5 इंटू 10 पावर माइनस 25 न्यूटन. ऑप्शन नंबर बी. मैं वापस बता रहा हूं, हमें पर इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स है वो निकालना था. ईच इलेक्ट्रॉन पे हमें, अगर, क्योंकि हमें करंट दिया है, हमें नंबर डेंसिटी दिया है, तो इफ यू रिमेंबर फॉर्मूला ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी विच वाज n into E into V into A, तो मुझे यहां से E into V मिल जाता. क्यों? क्योंकि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज इंटू V इंटू B आता है. चार्ज इज E, तो E इंटू V मिल गया इन टर्म्स ऑफ करंट, क्योंकि हमको पैरामीटर्स करंट N और A दिया है. तो आई हैव टू ब्रिंग दिस फॉर्मूला in terms of current, number density and area. So from the equation of current, I have EV equal to I by NA, and I know force due to magnetic field is QVB. तो Q is E, V is again V, तो EV हमको मिल गया I by NA, और B तो जैसा था वैसा ही है. So it is that simple. Substitute values and solve. Alright, so we'll stop here today. We'll continue with more questions in the next session.